अभी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट्स। तो पहले बायोकंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। Biocontrol agent refers to the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to humans and animals alike and have been polluting our environment, fruits, vegetables, crops, and plants. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds. तो क्या होता है कि बायोकंट्रोल एजेंट को अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो एक मेथड है जिससे हम लोग डिजीज एंड पेस्ट्स को प्लांट में ग्रो होने से बचा सकते हैं, जिससे प्लांट में डिजीजेस ना हो और पेस्ट ना हो। आजकल ये इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स के यूज करके ये सब टैकल किया जाता है। ये केमिकल ह्यूमंस के लिए बहुत ही हार्मफुल है और हमारे क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सॉइल को बहुत ही ज्यादा पोल्यूट करता है। ओके, biological control in agriculture. There are methods of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farm is that biodiversity furthers health. The more variety a landscape has, more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem. क्या होता है कि एग्रीकल्चर में बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए मेथड होता है of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. मतलब क्या होता है कि ये पेस्ट रिलाई करते नेचुरल प्रेडेशन से rather than chemicals, क्योंकि जितना हम लोग ज्यादा केमिकल्स यूज करेंगे एक क्रॉप में, एक चीज में, उतना हम लोग को प्रॉब्लम होगा। ओके, उतना हम लोग के इकोसिस्टम में ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो इससे क्या होता है कि इसको पेस्ट को इरेडिकेट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसको एक मैनेजेबल लेवल में रखेंगे, जिससे हम लोग कम यूज करना पड़े केमिकल्स। ओके, next. Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, organic farming is a holistic approach. Holistic मतलब एक अप्रोच है जो both side को बैलेंस करने में हेल्प करता है। It seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field, fauna, and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them, the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. The very familiar beetle with red and black marking, the ladybird and dragonfly are useful. क्या है? Ladybird and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquito. Aphids and mosquito को हटाने में
हेल्प करता है. An example microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis. ये अच्छे से याद रखना, spelling लिख के practice करना. The bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insects unharmed. A biological control being developed for the use of treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystem. एक fungi है, free-living fungi. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Next. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for species-specific, narrow spectrum insecticidal application. ये बहुत theoretical है, पढ़ना अच्छे से, बस एकदम details में लिखा गया है. Okay, they have been shown to have no negative impact on plants, mammals, fish, and birds, even on non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management IPM program, or when an ecological sensitive area is being treated. अब हम लोग पढ़ेंगे बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में. तो बायोफर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? बायोफर्टिलाइजर्स आर लो कॉस्ट, याद रखना, renewable source of plant nutrient which supplement chemical fertilizer. Renewable इसलिए बोला जाता है क्योंकि बायोफर्टिलाइजर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जो जल्दी से डिकम्पोज कर जाते हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते. बट केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो जिससे पोल्यूशन होता है और जल्दी क्या बोलते हैं, disintegrate नहीं करते. Biofertilizer substance that contain microorganisms which when added to the soil increases its fertility and promotes plant growth. They generate plant nutrients like nitrogen and phosphorus through their activities in the soil and make available to the plants in a gradual manner. Types of biofertilizers. देखो कितने सारे होते हैं. बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल मतलब जो एल्गी से होता है, एक्वाटिक फॉर्न जो पानी के अंदर जो फॉर्न होता है उससे, अर्थवर्म. Symbiotic nitrogen fixing bacteria. Rhizobium is one of the vital symbiotic nitrogen fixing bacteria. Here bacteria seek shelter and obtain food from plants. In return, they help by providing fixed nitrogen to the plants. Rhizobium में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके प्लांट को प्रोवाइड करता है. ठीक है. Azospirillum is a nitrogen fixing bacteria that live around the roots of higher plants but do not develop an intimate relation with the plants. वो roots ये एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे रूट्स, ये बैक्टीरिया रूट्स में लिव करता है, तो ये इनके साथ इंटीमेट रिलेशन नहीं होता है प्लांट का. It is often termed the rhizosphere associated as this bacteria collect plant exudate and same is used as a food by them. This process is termed as associative mutualism. Sorry. Next है symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria. ये था क्या? सिफ बैक्टीरिया. ये है cyanobacteria.
Blue-green algae or cyanobacteria from the symbiotic association with several plants. Liverwort, cycadod, and lichens is the same of the nitrogen-fixing cyanobacteria. ये राइजोबियम था, वो बैक्टीरिया था. ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, फॉर एग्जांपल लिवरवर्ट, साइकाडोफोर, लिचन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है. Anamena is found at the leaf cavity of the fern. ठीक है. Free-living nitrogen fixing bacteria. They are free-living soil bacteria which perform nitrogen fixation. They are saprotrophic anaerobic such as Clostridium beijeringici and Azotobacter. ये spelling लिख के practice करना. Among all the types of biofertilizer, Rhizobium and Azosporidium are most widely used. ठीक है, bold में लिखा है, अच्छे से याद रखना. Importance of biofertilizer. Biofertilizer के importance क्या है? Improves soil texture and yield of plant. Do not allow pathogen to flourish. Eco-friendly and cost-effective. Protect the environment from pollutants since they are natural fertilizers. Destroy many harmful substances present in the soil that can cause plant diseases. Prove to be the effective even under semi-arid conditions. Thank you.